Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our third chapter of class 7, that is properties of natural resources, and this is a part 1 of our video. Okay, so what are the properties, what are the different types of properties of natural resources? ठीक है, तो सबसे पहले we need to know that what do you mean by natural resources. Natural resources means whatever things or whatever substances we get from nature are known as what? Natural resources, like trees. Okay, trees, animals, and minerals. Okay, whatever plants, everything that we get from what? Nature are known as what? Natural resources. Okay, so their properties we will be studying. Okay, let's read. Which are the gases present in air? Why is air called homogeneous mixture? Okay, now what do you mean by the first question? First of all, what are the gases present in the air? So you must know that if we check the air quality index, okay, that is known as AQI. आपके मोबाइल में, सबके मोबाइल में ये चीज़ लिखी रहती है. If you click on weather ना, there will be an option for AQI. That means air quality index. Okay, air quality index का मतलब क्या होता है? That whatever our air is surrounded with, how much amount of nitrogen, oxygen, hydrogen, these types of gases which are mixed in the air, is what is the amount of that gases in the air is known as what? Air quality index. Okay, so the gases like nitrogen, okay, hydrogen, oxygen, these types of gases are included in the air. Okay, why is air called homogeneous mixture? Homogeneous mixture means that same types of gases are being mixed together, that's why it is known as what? Homogeneous mixture. Okay, what are the uses of various gases in the air? Okay, so the various gases in the air have different characteristics. Okay, the oxygen in the air which we breathe, okay, which we breathe is used for us to breathe in oxygen. Okay, but the carbon dioxide or the hydrogen present in the air or the nitrogen present in the air is used by plants to breathe. Okay, so there are different gases in the air and they have different characteristics. Every gases have different uses and different characteristics. Okay, now properties of air. Air is all around us. We cannot see it, yet we feel the presence of air. When we inhale, air is taken through the nose. If we blow on our hands through our lips, we can feel the air. Okay, so we all know that air is something like that which we cannot feel, which we cannot see, but we can just feel it. Okay, if you blow on your hands, अगर आप फूंक मारेंगे अपने hands पर, तो you can feel that there is air coming out from your lips. And then if you inhale, okay, अगर आप breathe करते हो, जोर से breathe in करते हो, ऐसे ब्रीद इन करेंगे अगर हम लोग, तो फिर क्या होगा? द एयर आर सराउंडेड बाय अस विल बी गोइंग इनसाइड आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. ओके, okay, there's a experiment over here. In this chapter there are many experiments जो हमको क्या करना है? हमको visualize करना है, and if possible we can do it at home also. There are easy experiments. Okay, so whenever I'm doing an experiment over here, you have to just imagine it. Take a stick from a broom or a paper or plastic straw, tie a thread at its center and hang it so that it remains horizontal. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे हमने एक लकड़ी, पाइप या स्ट्रॉ लिए, एंड वी जस्ट टाइड इट अप फ्रॉम द सेंटर सो दैट इट इज़ बैलेंस्ड. ओके, वो जो है ना ऐसे बैलेंस्ड हो रहा है, ना कि ऐसा टेढ़ा गिर रहा है, ना कि ऐसा. तो एग्जैक्टली बीच में आप बांधोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे सीधा रहेगा, ना ऐसा गिरेगा ना ऐसा गिरेगा. ओके, so what we have to do? Tie two rubber balloons of the same size at the two ends of the stick. अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक बलून बांधेंगे और यहाँ पर एक बलून बांधेंगे, दो बलून ऐसे बांध देंगे हम. ठीक है, एंड आफ्टर टाइंग दैट बलून क्या करना है? See to it that the stick remains horizontal. Now remove one balloon, inflate it and tie it again in its original position. अब क्या करना है? तो अभी भी जो है ना वो जो स्टिक है वो हमने जो बांधी है वो बैलेंस्ड है. ओके, सो नाउ यू जस्ट रिमूव अ बलून फ्रॉम दिस साइड एंड यू जस्ट ब्लो एयर इन इट एंड फिर वापस बांध दो आप. तो क्या होगा? ये जो स्टिक है ये इस तरफ जो है ऐसे गिर जाएगी, है ना, इस तरफ से जो है वो बेंड हो जाएगी. वाई? बिकॉज
Does the stick remains horizontal? No, the stick does not remain the horizontal. The stick goes down on the side of the inflated balloon, है ना, जो साइड पे हम लोग ने फुलाया हुआ बलून डाले हैं वो साइड पे वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. This means that air has weight. Air is the mixture of gases. Therefore, like all the other matter, it has mass and weight. Okay, so this is an important point which you have to write, that air is the mixture of many gases and therefore it has mass and also weight. Okay, next. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in the position even if you let it go. Okay, now what is the experiment over here? यहाँ पे आपने ये चीज़ को देखा होगा. इसे हम जो है बड़ा अगर लेंगे तो होली वगैरह में जो पिचकारी यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, दैट इज़ द सेम थिंग. और एल्स यू कैन सी दिस थिंग. डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर जो है इसके ऊपर निडल लगाता है और फिर वो आपको जो है इंजेक्शन देता है. ओके, सो दिस इज़ द सेम थिंग. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just pull the piston like this only. okay, अगर आपको जो है पिस्टन को ऐसे ही पुल करना है, उसके अंदर कोई भी पानी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे खींचेंगे उसको और फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे. अब जब हम देखेंगे ना, तो हम जब उसको ऐसे उंगली पे रख के प्रेस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो प्रेस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, पानी हमने भरे नहीं, कुछ भी नहीं भरे, फिर भी वो प्रेस नहीं हो रहा है. वाई? बिकॉज देयर इज एयर इनसाइड इट. Now close the inlet hole by syringe tightly with your thumb. Pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? Thus the piston remains as it after you let it go. Okay, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उसे जो है हमने ऐसे खींचे तो वो आराम से खींचा गया था. नाउ यू हैव टू पुट योर थंब और योर फिंगर ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन एंड देन यू हैव टू पुल इट. तो अब यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा ईजीली जो है ना वो पुल हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हार्ड होगा पुल करने में, क्योंकि अब जो है ना एयर अंदर जा ही नहीं रहा है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, पुल नहीं कर पाएंगे. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज इन द एयर आर इन द कॉन्स्टेंट मोशन. When these molecules strike a body, they create pressure on the body. This is the measure of the air and we call it atmospheric pressure. Okay, so you have to write this definition from here till here. Okay, this is your homework. ये आपको definition लिखना है कि atmospheric pressure होता क्या है. On pulling the piston with the inlet hole of the syringe closed, more space becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied. As a result, the pressure of the air in the syringe is lowered. Comparatively, the pressure of the outside air is very high. That is why when the pulled out piston is released and immediately pushed in. If the experiment is repeated holding the syringe in the different position like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go in the same extent in all the cases. From this we have infer the atmospheric pressure is the same in all the direction. Okay, what it is trying to say कि अगर हम लोग ने पिस्टन को अगर स्ट्रेट पकड़े थे तो हम क्या करेंगे, अगर उसको टेढ़ा पकड़ेंगे, अगर हम टेढ़ा पकड़ेंगे देन वी पुल इट, सीधा पकड़ेंगे देन वी पुल इट, हमने फिर उसको टेढ़ा कर दिया देन वी पुल इट, इफ़ वी आर गेटिंग इट डाउनवर्ड्स एंड देन वी पुल इट अपवर्ड्स, तो क्या होगा, हर जगह जो है ना सेम प्रेशर ही अप्लाई होगा, कहीं पर भी डिफरेंट प्रेशर अप्लाई नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फियरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दिस थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, ये जो है सिंपल एक्सपेरिमेंट है. टेक सम वाटर इन द प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट. ओके, हमें क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है एंड देन वी हैव टू टेक अ स्ट्रॉ. ओके, स्ट्रॉ उसके अंदर डाल देना है. Hold a small piece in other straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw. हमने एक स्ट्रॉ जो है ऐसा पानी के अंदर डाल के रखा है, अब दूसरा स्ट्रॉ जो है ना हमको ऐसा पकड़ना है इसके ही पास. ओके, blow hard through the small piece of the straw. Will the fountain of the water will you see the fountain of water? What did the happen? ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने जो है ना एक स्ट्रॉ ऐसा लिया था, एक स्ट्रॉ हमने ऐसा लिया था. ठीक है, अगर ये स्ट्रॉ ऐसे ही होता, ऐसा अगर हम एक स्ट्रॉ लेते और फिर यहाँ से हम लोग जो है हवा खींचते अंदर तो पानी आता, तो हमको समझ में आता कि भाई हाँ थोड़ा सा एयर क्वालिटी की वजह से वो आया. बट आवर स्ट्रॉ इज़ लाइक दिस एंड द अदर स्ट्रॉ विच वी आर ब्लोइंग इन, वो जो है ऐसा है. तो क्या होता है कि एयर जो है ना वो यहाँ से यहाँ जाता है एंड देन इट गोज़ डाउन, और फिर वो क्या करता है, वो पानी को ऐसे खींचता है और फिर वी कैन सी दैट इन द स्ट्रॉ ऐसे
फाउंटेन निकलेगा, यानी कि पानी जो है वो ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि एयर में उतना प्रेशर नहीं है कि वो उस पानी को यहाँ तक लेके जाए और वो स्ट्रोक से आपके मुंह में आ जाए, लेकिन यहाँ से इट कैन मेक अ फाउंटेन. ओके, यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away and hence the pressure of the air at the opening goes down. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed where the pressure is higher to where it is lower, that it is the upward direction, and the water comes out in the form of fountain. Okay, so ये क्या बोलना चाह रहा है कि here the atmospheric pressure is less and out the atmospheric pressure is more. Okay, so when we blowed it, जैसे ही हमने इसमें से अंदर जो है हवा खींचे, then the water just went upside, जहाँ पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जो है वो वाटर क्या हुआ, ट्रेवल हुआ, एंड देयरफॉर द वाटर मेड अ फाउंटेन ओवर हियर. The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. This straw fountain works on Bernoulli's principle. Okay, so this is the important thing. This is the scientist name Bernoulli. Okay, you have to remember this. Okay, so this works on the Bernoulli's principle as we have done the experiment over here. So it is telling that जितनी ज़ोर से आप जो है सांस अंदर लोगे यहाँ से, उतनी ज़ोर से उतना बड़ा जो है you can see the fountain over there. Okay. Now another experiment, when there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts flowing from one place to higher pressure to the place of the lower pressure. Okay, so what it is telling that high pressure say, high pressure, what it is telling, when there exists a difference in the air pressure, the two different places, the air starts flowing from the place higher pressure to the lower pressure. Higher pressure से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वाटर विल बी स्टार्ट मूविंग. ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ से जहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा उधर जो है वो पानी जो है वो क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा. ओके, एट सच टाइम्स वी फील ब्रीज और विंड ब्लोइंग. Thus winds are an effect of difference in air pressure. You will learn more about in the lesson called as winds in geography. Okay, in geography there is a chapter called as winds. तो उसमें आपको जो है ये चीज़ बहुत ही in detail समझ में आएगी. But here only it is told that the water always travel from higher pressure to the lower pressure. Okay. Now what is the experiment? टेक आइस क्यूब्स इन द ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट. ओके, एक हमने ग्लास ले लिया है, उसके 3/4 हाइट तक हमने क्या कर दिया है, भर दिया है आइस क्यूब्स. Now observe what happens. How did the water droplet appears on the outside of the glass? This is so common. Okay, we have just seen not even in the ice but also if we are having a chilled water. Okay, ठंडा पानी अगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं so we can see that उसके बाहर जो है ना वो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं और यहाँ पे भी ऐसे पानी कभी कभी क्या हो जाता है, जम जाता है. सो व्हाई डज दिस हैपन? Due to the ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cool down. As the water vapor in this air cools down, it condenses and gets transformed into water. It is the water that collects on the outer surface of the glass. अब यहाँ पे क्या होता है कि the ice that is in the glass, okay, because of the atmospheric pressure वो क्या होने लगता है, वो cool down होने लगता है. ओके, सो कूल डाउन गर्म होने लगता है और फिर वो जब पिघलता है तो उसकी वजह से जो ग्लास है ना वो ग्लास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. अब वो ग्लास ठंडा होने की वजह से जो भी यहाँ पे एयर आ रहा है ना वो क्या होता है, एयर इस पे लग करके वो एयर भी ठंडी हो जाती है. एंड बिकॉज द एयर इज़ गेटिंग कूलर तो वहाँ पर पानी क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, जमने लगता है. इसीलिए तो है वो जो गैस आई ना यहाँ से जो हवा आई और जो ठंडे ग्लास को उसने छुई तो वो क्या बन गई, पानी बन गई. It is the water that collects on the outer surface of the glass. Okay, तो ये जो पानी आ रहा है ना, जो पानी निकल रहा है ये अंदर से नहीं आता है, ये जो बाहर गैस है ना, when it touches the glass then only it becomes the water. Okay,
द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है गर्मी. ओके, सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल्स ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सिंगल डे. ओके, वी नो दैट when we wake up at 6 a.m. The humidity is really low. बट जैसे जैसे 12 बजने लग जाते हैं द ह्यूमिडिटी बिकम्स वेरी हाई. ओके, 3 बजते बजते ये ह्यूमिडिटी और हाई हो जाता है एंड देन 4 5 6 बजते बजते ये ह्यूमिडिटी नीचे जाने लग जाता है. ओके, दैट इट्स सेइंग दैट इन अ सिंगल डे द ह्यूमिडिटी चेंज वेरी मच टाइम्स. ओके, the level of humidity of the air is determined by its capacity to hold water vapor. Okay, so the air, that how much air that it can hold is known as humidity. Okay, अब आप बोलोगे सर आप तो गर्मी की बात कर रहे थे. Therefore गर्मी की बात मैं इसलिए कर रहा था because when there is a hot weather, okay, जब बाहर गर्मी होती है the water droplets get evaporates more. अब जब गर्मी होगी वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होंगे तो हवा के अंदर पानी ज़्यादा होगी ना, तो इनडायरेक्टली व्हेन द वाटर वेपर इज मोर बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई. ओके, इफ द टेम्परेचर इज लो देन वाटर वेपर द एयर कांट कैच द और कांट होल्ड द वाटर इनसाइड इट. ओके, ड्यूरिंग द नाइट at the dawn when the temperature of air is low the capacity to hold the water vapor is less. Okay, what I said, जब हमारा रात में ठंडी हो जाती है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वाटर वेपर उनको कैच करने की ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है. At such time the excess vapor is transformed into water droplet. This is called as dew. Okay, so whenever you all can see that in the winter season, okay, when you go to the school, okay, early morning अगर आप स्कूल जाते हो 7 बजे 6 बजे, so you all can see that there are some water droplets on the surface of the glass of the cars and windows. Okay, so that is nothing but the water droplets which was evaporated in the day times. और रात में ठंडी होने की वजह से टेम्परेचर गिरने की वजह से the water droplets comes down and they settled on the surface of the car or the bike, whatever. Okay, they are known as what? Dews. In the afternoon when the temperature of the air is high the capacity of the air hold moisture also increases. Okay, what I said, then compared to it full capacity of hold water the proportion of moisture in the air is less when we feel that the air is dry. Okay, so what it is tell that if the air is dry, okay, अगर हमको लगता है कि dry air है then the temperature is also less because there is no water in the air. Okay, the proportion of water vapor in the air is high during the monsoon and it is coastal areas. Okay, so nowadays in the monsoon season you all can see that the proportion of water vapor in the air is very high. As a result we feel dampness or humidity. Okay, therefore we feel the humidity. है ना, बोलते हैं ना कि यार अभी बारिश हो गई, अभी बहुत गर्मी लग रही है, अभी तो बारिश हो रही थी. Okay, so the humidity, the temperature rise we feel because of the rain is there because there is more amount of water in the water vapor and the humidity is really high. Okay, another experiment, dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a white container. What do you observe? Okay, हम जो है ना अभी समझो एक वाइट कंटेनर के अंदर एक पानी की बॉटल डाल देंगे. सो द बॉटल जो है ना वो पूरा एक टाइम में नहीं भरेगा. ओके, वो धीरे धीरे करके भरता है या तो वो ऐसा आधा ही भरा रहता है. व्हाट इज द रीजन? What change takes place in the balloon on the filling air in it? Okay, balloon अगर हम देखते हैं तो इतना छोटा सा होता है. Okay, when we blow air in it वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, बड़ा हो जाता है. Okay, इतना छोटा सा बलून लेंगे हम और उसके अंदर जो है हवा भरेंगे तो वो इतना बड़ा सा हो जाता है ना. So why it happens? We come to know from the activities above the air has properties like occupying space. Okay, तो हवा को भी क्या होती है, ज़रूरत होती है, हमारे जगह की ज़रूरत होती है. ओके, हैविंग अ सर्टन वॉल्यूम, हैविंग मास एंड वेट. ओके, इट इज़ ऑल्सो हैविंग मास एंड वेट एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. Air is a mixture of very fine particle of some gases, dust, smoke and moisture. When rays of the light fall on the minute particles, the particles spread in the light in all the direction. The natural phenomena is called as scattering of light. It is very important part. What do you mean by scattering of light? जब हमारे air पे sun rays पड़ती हैं तो you all can see that some small particles we can see coming from the
windows. Okay, that small particles is nothing but the particles in the air, and that phenomena is nothing but known as the scattering of light. Okay, so this is known as scattering of light. So this is the last topic of ours today. Okay, सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, आज जो हमने कवर किया, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने इसमें देखे हैं, आप प्लीज़ घर पे ट्राई करिएगा. खास करके वो बलून वाला और वो जो ग्लास में पानी भरना था ठंडे पानी को. ओके, दैट ओके, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स घर पे आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा. दिस पार्ट इज़ द फिजिक्स पार्ट इज़ फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो आप जो है एक्सपेरिमेंट जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको जो है रट्टा मारना पड़ेगा. और फिजिक्स कभी भी रट्टा मत मारिए फ्रेंड्स. फिजिक्स कभी भी हमको जो है एक्सपेरिमेंट से समझकर पढ़ना होता है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.